क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1। तो कहानी कुछ ऐसी चलती है। एक पेड़ है जो कि आंधी की वजह से बीच में से टूट जाता है और बीच में से टूटने के बाद वो पेड़ आधा नीचे लटक जाता है। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि जो एंगल वो बना रहा है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, उसका टॉप वाला पार्ट जो है वो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। एंड जो डिस्टेंस ट्री के बॉटम में एंड टॉप में वो एरिया जो दोनों ही ग्राउंड को टच कर रहा है वो कितना है, 8 मीटर। नाउ इट आस्क्स अस टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सो हाउ कैन वी फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री? हाइट फाइंड करने के लिए हमें एक ये वाला एरिया निकालना है, देन इसकी लेंथ, बेसिकली इसकी लेंथ एंड इसकी लेंथ निकाल के हम दोनों को ऐड कर दे अगर, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ट्री की हाइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। We know that tan 30 degree tan theta is equal to perpendicular upon base. Let's name this triangle A, B, C, where this angle is 30 degree and this side is 8 meter. So we know that tan theta is equal to perpendicular upon base and tan C is equals to AB upon BC, which we can also write as AB upon 8. Now here we know that tan 30 degree is equals to AB upon 8 and tan 30 degree is equals to 1 upon root 3. Okay. Now AB multiplying this, AB root 3 is equals to 8 and AB is equals to 8 upon root 3. First we cross multiplied this, after we made it this. Now we have find the height of AB, which is 8 upon root 3 meter. Now we have to find the height of AC. So AC we can use the formula of sine, that is perpendicular upon hypotenuse. So writing it the other way, sine theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. So sine C is equals to AB upon AC, which is sine 30 degree is equals to 1 by 2, which is equals to AB upon AC. So value of AB is 8 upon root 3 divided by AC, which we don't know, is equals to 1 by 2. 16 upon root 3 is equals to height of AC. So this is the height of AC and this is the height of AB. So what is the height of the triangle? It is AB plus AC. So we can write 8 upon root 3 plus 16 upon root 3, which is actually the height of the triangle, equals to 24 upon root 3, and we can write 24 as 3 into 8 upon root 3. Now making this into two parts, that is root 3 into root 3, one root 3 will get cancelled with the other one. So the height of the tree is actually 8 root 3. What is this? This is the height of the triangle, height of the tree.